So hello everyone. Actually, I was getting bored in my hostel because everyone of my friends in the hostel have left for their home because of the holiday of Holi. So, but some of my friends are still standing here, still staying here. But I was getting bored because every most of my friends have left for their home. So I just try to do something new and exciting. So I just try to solve some LeetCode questions on YouTube. I was trying to explore ki how I can solve, how I can stream live, how can solve questions on a live. So basically it is going to have a fun because this is a top interview 150 questions. These questions are is a very good set of questions provided by the lead code. It covers all the concept right from the array to the dynamic programming, including graphs and all. So, if you are preparing for the PCBs, that is product-based company or any FANG company, then this can serve as a building block, or you can say that if you are just want to revise all the concept that we have studied in 1 or 2 years, then this is one of the best set that we can solve for the purpose of revision. So, I will try to solve as much question as possible in one night itself, because whole it is not it is not possible to solve whole sheet in one night itself. So I will just try to solve as much question as possible. Let's start from the very basic, that is array and string. Array and string is a very basic very basic data structure of data structures and algorithm. It is just a building block that makes the foundation for most of the complex topic that we're going to study, that we have studied in the past. So let's have a fun and try to solve as much as questions as possible. I will just try to solve every questions because I do have uh, solved some of the questions of this particular seat, and I thought this particular seat is one of the best seat in the market because it is provided the lead code. So it is made by the experienced people and get updated as per the new trends, as per the new curriculum, and as per the requirement of the PCBs and fact. So let's start from the from the very first question, that we have to merge the sorted array. Basically, in this particular question, we are provided two array and two sorted array, and we have to merge this two sorted array to make a one array that is already that is also sorted. So in this particular question, we are not required to return anything. We just have to modify the nums1. In nums1, we are provided some numbers, and after that particular number there is some auxiliary space equivalent to the size of num2, and that is 0, because auxiliary space is present in the nums1, but the numbers that is stored in this particular auxiliary space is 0. So we are required to modify this particular auxiliary space, so that we can get a proper array, and we have to sort that particular array itself. We are not required to use extra space for for that particular purpose. So the method one is I can solve it using stl function. So let's so let's try to do it very brute force approach, and let's have a fun. So the concept is I am just trying to store all the number nums2 in the nums1, and I will use stl function to sort a whole array, whole vector, so that I will get the sorted array that is required as per the requirement of the question. I think I have done something wrong. Yeah, of course I have. So yeah, it works fine.
सो बेसिकली हमने इसमें करा क्या है, नम्स वन में हमारे पास नंबर दे रखा था, ऑक्सिलरी स्पेस दे रखा था, हमने नम्स टू के नंबर्स को भी उसमें डाल दिया और सॉर्टिंग फंक्शन का यूज करके हमने इसको सॉल्व कर दिया. सो दिस इज द वेरी बेसिक अप्रोच बाय विच वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, but we can see that our time complexity is more as compared to the other people. So how we can improve our time complexity for this particular problem, that we are going to see in the next approach. Because we can observe that this is a question of merge sorted array, and we are running out of time complexity by this particular approach. So we can try to solve this particular question using two pointer approach. So how we can solve this particular question using two pointer approach, let's have a look. So using two pointer approach, so let's make one pointer named k and assign the value m plus n minus 1 to this particular pointer, and run a while loop that is k till when I is till when we can use this particular loop till when nums2 doesn't become 0. So let's try to make int I is equal to m minus 1, int j is equal to n minus 1, and try to run the loop till when j doesn't become equal to 0. So it would be quite fun, and try to have a fun, bro. While j is greater than 0, of course, j is greater than or I think equal to 0. We'll try to solve this particular problem in this is the approach. Basically what we are trying to do, we are trying to just say we are trying to do something like that. If we are just trying to check if the number in present in nums2 and the nums1, and we'll compare both the numbers right from the end, and the number who would be greater, we would place that particular number at the last of of which are a nums1. So basically it will serve our purpose that we are trying to solve. So let's have a quick look on how we can proceed on this particular question. So basically we have initialized I as a m minus 1, and m is the size of nums1, and we have initialized j as n minus 1, and n is what? N is actually the size of n minus 1. So we will try to move this particular array as per our till when j is greater or equal to 0. So if nums1 of I is greater than nums2 of j, or you can say that greater or equal to that, then we would place a number present in nums1 at the place of k. ठीक है. So basically nums1 of k is equal to nums1 of I, and k minus minus and I माइनस माइनस. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, else if nums2 is 2 of what j is greater than nums1 of I, then k minus minus and j minus minus. Absolutely fine. But यहाँ पे क्या है कि ये हो सकता है कि we have encountered I is less than 0. We could have encountered I is less than 0. If j got finished, then it's fine, it's completely fine. But if I got less than 0, then we would not able to do something so we have to put one condition, that is I should also be greater than equal to 0, because if we will encounter I is less than 0, then there will be no is nothing. If we put nums of minus 1, because it will give us error. Solving or going live and solving the question is much more difficult as compared to solving at our comfort level. So it's my first time, so let's enjoy the journey. So we can do one thing, for int x is equal to 0,
2x to the x greater than j x plus 1. We are getting certain error. I think I have done some mistake, which is quite obvious because I'm expert at doing mistakes. It's nums, it's not num. And still my answer is not correct because I've committed mistakes. I've committed mistakes and mistakes. Here we can see that we have successfully compared 1 with 2 and we have placed that particular 2 at the last and all. Everything is quite fine. I think I have not. So it got accepted. So its time complexity is better as compared to the previous time complexity because in this particular case we are using the two pointer. One pointer we have placed at the last of the last of the vector, and one pointer we have two pointer we have placed at our desired location. First of all, key is that is m plus n minus 1, that is placed at the last of the last particular entity of the number 1, and I is placed at m minus 1 and j is placed at n minus 1, and mn is basically size of the vector. So we have tried to do something like that कि जैसे 1 2 3 and 2 5 6 and we have compared 3 and 6, and the number that will be greater, we have placed that particular number at the last of the nums 1. Similarly, we have compared second number, that is 5 and 3, and number 5 is greater as compared to 3 when we have placed that particular number here, and then we have compared 2 and 3 and the 3 is greater than we have placed that particular number here. And similarly we have done everything, and when this particular number get vanished, then it will remain the same. But if this particular number got vanished, then we have to place this particular number on this particular space that get empty due to swapping. So basically this can be solved with so many approaches, and two of the approach that I have discussed here. So I'm doing live stream for the very first time, so I just want to view how it is going on. So let's have this my channel. Sure, I'm live now. So in this particular questions, हमें क्या करना है? We are provided with some numbers and we are required to remove a particular number. Given a number, integer array nums and a value, remove all the occurrence of particular value in nums in place. The order of the element may be changed. Return the number in nums which are not equal to value. So basically we are concerned about कि हमें एक number provided है that is 3 and we have to remove this particular number from the array. So let's begin the journey. We are required to return the size of the array without that particular number. So we can do it using different approaches. So let's have
So let's try to solve this particular questions using different approaches. So we are supposed to modify this particular nums vector itself. We are not supposed to make another data structures or use auxiliary space, because we are required to give the size of the vector without that particular number. So it will use that particular size on the this particular on the basic or standard, or we can say the default vector itself. So let's try to do solve this particular question. This particular question is not difficult at all, not at all. So first of all, as a brute force approach, what you can think, you are thinking of using an auxiliary space. So let's try to solve with a brute force approach, then after that we'll solve it using some another approach. So solve it using the auxiliary space. Make an auxiliary vector of int something. Not really required in this particular case. अगर नम्स ऑफ आई वैल्यू के बराबर नहीं है तो हम उसको आंसर में डाल देंगे. I think we are not required to do this particular thing also. So I think this is correct. So yeah, it's absolutely correct, and our beat is 100%. So you can solve this particular question this particular way also, or we can solve this particular question using some other way also. We can use two pointer approach, we can use hashing approach, and this is the quite basic question. So I'm just trying to solve each and every question, so I will not give much importance to such questions, and I will move forward. So the third question is remove duplicates. So remove duplicates from array. Basically, we are provided array, and there is some duplicates number also, and we have to remove duplicates from the array. For example, here example is provided. We have 1, 1, 2, and it actually removed 1 and 2. We removed 1, 1, and the resultant array is basically 2. So this particular questions can be solved very emphatically and very easily. So one of the approaches of course a brute force approach, that where we can solve this particular problem using hash maps and just using the auxiliary or the extra space. But I will not waste my particular time in this particular way, and I will try to solve this particular problem using optimal approach, or we can say that this two pointer approach. So let's try to solve this particular questions. So here I will try to make one. I will try to assign a value, that is nums okay nums of size, ठीक है. So k बनाओ एक, उसमें डाल दो n-1, ठीक है, और end I is equal to 0, I से n I plus plus, ठीक है,
and I think we are not supposed to do this. No, assign k1, ठीक है, and nums of एक इफ कंडीशन चेक कर लेते हैं हम लोग. अगर nums of I इज इक्वल टू है nums of i-1 के बराबर है, nums of I और nums of i-1 बराबर है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हम I को 1 रखें, क्योंकि इससे हमारा एरर नहीं मिलना चाहिए. तो यहाँ पे हमने इसका जो nums of I इज इक्वल टू nums of i-1 के बराबर है. अगर दोनों बराबर है I और i-1 का नंबर, फिर हम क्या करेंगे, k प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, एंड क्या कर देंगे, nums of देन हम के प्लस प्लस नहीं करेंगे. अगर अगर नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई नहीं बराबर नहीं है, तो यूनिक नंबर है अगर, तब हम उसे रखना है, नहीं तो नहीं रखना है हमें. अगर बराबर नहीं है तो देन हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ के इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई कर देंगे, एंड देन हम के को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है. और यही के हमें रिटर्न भी करना है, रिटर्न दैट पर्टिकुलर के. So yeah, it got accepted. So yeah, it got accepted. Our bid is quite satisfactory. So this is the approach of this particular problem. Basically हम कर क्या रहे हैं, हमने एक k वैल्यू k बना दिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और हम उस नंबर में क्या कर रहे हैं, आगे हम उसी सब नंबर को रख रहे हैं जो डुप्लीकेट्स नहीं है, या फिर जो जिसमें डुप्लीकेट्स है उसको हम रिमूव, उसको हम रख ही नहीं रहे हैं, और इस वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एंड इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन of array. Basically we are supposed to think quite fundamentally if you are supposed to find anything, find a quite emphatic solution of a problem. So let's move to the next problem, and our next problem is remove duplicate from the array. It is of a medium level question, and that was of easy level of question. So let's try to solve it. So basically here in this particular question, given an integer sorted non-decreasing order, remove some duplicates in place such that each unique elements appear at most twice. So here in this particular question, in this previous question, we are supposed to remove the duplicates, and each element must appear only once. But in this particular questions, we are supposed to remove the numbers that appears more than twice, but the number that appeared twice or less than twice can be present in the array. So at most a number can appear that is twice. So in this particular questions can be solved using brute force approach, using the auxiliary space and all, and using the initializing the count and all everything. So but I will try to solve this particular question using the hash map. So let's have a look how I can solve this particular question using the hash map. So approach of, so using hash map, I think I'm getting some error because I have not initialized a variable k. So yeah, it got accepted. It is a medium level of questions, but it is quite easy to solve. So basically हमने करा क्या है यहाँ पे,
हमने क्या किया है कि सारे नंबर को क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि दो से ज़्यादा बार तो अपीयर नहीं हुआ है। अगर अगर दो से कम बार या फिर दो बार अपीयर हुआ है तो तब तक हम उस नंबर को नम्स में अपडेट करते जा रहे हैं, और हम चेक करते जा रहे हैं कि एम पी पी में डाल करके कि वो दो से अगर ज़्यादा बार है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और कि कितने कितने के बराबर होगा, जितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट या फिर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे होंगे जो दो या दो से कम बार अपीयर होंगे। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वे। सो till now we have solved must sort array, remove element, remove duplicate from the sorted array, remove duplicate from the sorted array too, and now we are on to the solving a program named majority element. So in this particular questions we are supposed to solve questions. So the first and very basic approach is we can solve this particular question using hash map. It is quite obvious because in the question of in the questions of array where we are trying to solving something, how many times a particular element have appeared for the duplicate segment, where there is something we are concerned about the numbers and all. So in this you should have a strike that we can solve this particular questions using hash map, because hash map is what, just showing the occurrence, just showing how many number of times a particular element have appeared. Understood? So let's have a string. So चलिए सॉल्व करते हैं भैया, आ जाइए। एलिमेंट यूजिंग हैश मैप, ठीक है। एन बना लो भैया जिसमें नम्स डॉट साइज डाल दो, ठीक है। वो लूप लगा भैया, ठीक है। if mpp of nums of I is greater than n by 2, क्या कर दूं, answer is equal to nums of I and break from the loop. Make an unordered group, unordered map actually. So yeah, this particular question is also easy. सो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हम एक मैप बना लिए हैं, उसमें नंबर्स को डालते जा रहे हैं और चेक कर लिए कि कब किसी नंबर का अकरेंस n बाई 2 से ज़्यादा हो जाता है, और n बाई 2 से अगर किसी का अकरेंस ज़्यादा हो जाता है देन हम उसको रिटर्न कर देते हैं। और इसी क्वेश्चन को हम लूप की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू दी हैश मैप। But we are running out of time, and we have to solve majority of the questions, most of the questions, because I am doing revision. So we will move forward this time. So now the question, there is question rotate array. So I think we I think we have to take rest because I am currently live streaming from 45 minutes in a row. So let's have a little bit break. Let's have a break. So we are trying to do something extraordinary and unusual in India. So it was quite obvious and amazing to do something extraordinary in this particular way. So in this particular questions, we are basically concerned about rotation. Rotation means that is k is equal to 3. Then we have to move key element in the rightward side by the k steps.
So we can solve this particular questions using so many approach, but I will show you each and every approach for this particular problem. So let's have a fun. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें नंबर प्रोवाइडेड है एंड वी आर रिक्वायर्ड टू रोटेट दैट पर्टिकुलर नंबर बाय द केस स्टेप्स. सो एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है, 1 2 3 4 5 6 7 हमें प्रोवाइडेड है, तो हमें क्या करना है कि सबको के स्टेप से करना है. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है आंसर 5 6 7, डैट मीन से ये तीन एलिमेंट जो है आगे आ गए हैं और ये सारे एलिमेंट इधर चले गए. तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम सारे नंबर को रिवर्स कर दें. ठीक है, तो हम कर सकते हैं. तो ये काम करते हैं, रिवर्स करते हैं सारे नंबर. तो नम्स डॉट बिगिन से लेकर के नम्स डॉट एंड तक. ठीक है भैया, कर दिया. ठीक है, कर दिया. हमारे पास के क्या है, इंट के इज इक्वल टू हमारे पास समथिंग, लेकिन के हमें प्रोवाइडेड हो सकता है जो कि नंबर के साइज से भी बड़ा हो. सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिमाइंडर with respect to size of the num. So let's find the size, that is nums dot size and int k is equal to k percentage n. ठीक है, and reverse. और हमारे पास नंबर फिर रिवर्स करने के बाद क्या आ गया, 7 6 5 लाइक दैट. तो हम क्या, हमें हमें रिजल्टेंट क्या चाहिए, 5 6 7. तो हमें इसको भी इस 7 6 5 जो है उसको रिवर्स कर देना होगा, तो 5 6 7 आएगा. तो क्या करेंगे, हम उसको रिवर्स कर दें. नम्स डॉट बिगिन ना, नम्स डॉट कहाँ से कहाँ तक, नम्स डॉट बिगिन से लेकर के नम्स डॉट बिगिन प्लस के नंबर्स. ठीक है, इतना ही हमें करना है ना. फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास अब क्या आ गया 5 6 7. अब हम और हमारे पास क्या है, पहले जब हमने रिवर्स किया था हमारे पास 6 7 5 इस तरह से था, 4 3 2 1. तो हमें इसको भी रिवर्स करना होगा ना, 4 3 2 1 से 1 2 3 4 हो जाए. तो फिर हम उसको करते हैं बिगिन प्लस के से, जहाँ से वो ख़त्म हुआ वहाँ से ही करेंगे, डॉट एंड. ठीक है, ये कर सकते हैं. and we are not supposed to return anything, so I think it would work fine if I have done it correctly, otherwise it will show error. So I have initialized it once again. यहाँ पे error है, so we can solve it here. In that particular way I think it's correct. Yeah, of course it is correct. So yeah, it's working absolutely fine. We can solve it this particular question using other approaches also. There is 2 3 approaches, but it is also one of the approach, and this is quite efficient approach. It is not a very difficult approach. We are just required to write 4 lines of codes, and this complex or we can say the medium level of questions got solved in less than a minute. So अभी यार थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ मैं. Driver side by the case steps. So we can solve this particular question using so many approach, but I will show you each and every approach for this particular. So let's have a fun. So यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें नंबर प्रोवाइडेड है, रिक्वायर्ड टू रोटेट दैट पर्टिकुलर नंबर बाय द केस स्टेप्स. सो एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात है. चलिए भैया आगे अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिकॉज हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है मज़े मज़े में. सो आई डू हैव सॉल्व 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस, एंड नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गॉट आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू. I have talked to my friends and they said, yeah, of course, I have got the questions related to stock and all. So let's have this particular question. So यहाँ पे हमारे पास we are provided that is price and prices I. Prices I is basically a array. Prices I is basically a array. Is the price of a given stock on ith day. So we want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. So return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, then return 0.
सो हमें क्या करना है, वी वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय नॉन स्टॉक, चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दिस। हमें क्या करना है, एक दिन बाय स्टॉक बाय करना है एंड एक दिन सेल करना है। सो एज पर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज कंसर्न, वी देखो फॉर एग्जांपल 7, 1, 5, 3, 6, 4 है एंड आउटपुट इज 5, दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वी कैन गेट इज 5। सो बाय ऑन डे 2, ऑफ कोर्स बाय ऑन डे 2 and sell it on day 5. So day 5, sell it on day 5, that is profit is 6 minus 1, that is 5. Note that buying on day 2 and selling on day 1 is not allowed, because we cannot buy in the future and sell it in the past. We have to buy anything in the present or in the past, then we can solve, we can sell it in the future. So we are not a traveler, so we are not supposed to time travel in order to solve this particular problem. So we are concerned to select one day when we could have bought something, and some another day where we are supposed to sell that particular thing. So what can we do? Let's try to view. So here I am trying to make end profit and max I, or we can say that answer. ठीक है? So there is different approaches for solving these questions, and I'm trying to explore some of the approaches. I think I got exhausted a little bit, so I will take a little bit break. एक बात तो है भैया, आप कैमरे के सामने बैठे हो ना, तो आप में एक डिसिप्लिन अपने आप आ जाती है। ऐसे में सॉल्व कर रहा होता, देन आई वुड बी ऑन बेड, आई वाज जस्ट लाइंग वाचिंग समथिंग एंड जस्ट हैव अ चिल, बट at that particular moment I'm just concentrating on the problems. In spite of that, I'm getting tired. So I'll take little bit more break. तो चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइडेड है, हमें प्रोवाइडेड है कि एक दिन हम स्टॉक को खरीद सकते हैं और किसी दूसरे दिन हम उस स्टॉक को बेच सकते हैं। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। तो हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे,
तो एक प्रॉफिट हमने बना लिया, ठीक है, प्रॉफिट क्या है, ठीक है। आई थिंक प्रॉफिट हमें लूप के अंदर बनाना चाहिए, और आंसर क्या होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, इंट मिनिमम से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, 4 इंट आई इजकल टू 0, आई से एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे एक और हम सेलिंग प्राइस को इनिशियलाइज कर देते हैं, समथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग। सबसे पहले हम क्या इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, क्या, प्राइस ऑफ 0 से, ठीक है। इफ एस क्या है हमारे पास कोई नंबर आ गया जो कि उससे छोटा है, मतलब हमने 7 रुपये में खरीदा, लेकिन कभी नंबर ऐसा आ रहा है कि 1 रुपये आ गया, तो हमें 7 रुपये से बेहतर है नहीं कि हम 1 रुपये में खरीदें, ठीक है। तो प्राइसेस ऑफ आई अगर इससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, एस इजकल टू प्राइसेस ऑफ आई कर देंगे, ठीक है। और दूसरा हम क्या करेंगे, एल्स फिर बाकी जो भी कंडीशन है उस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, इफ एस माइनस क्या है, प्राइसेस ऑफ आई अगर इससे क्या है बड़ा है, तो उस टाइम हम बेच सकते हैं ना इसको, तो वही काम करेंगे, ऑफ एस इज ग्रेटर देन व्हाट, प्रॉफिट। हमारे पास जो पहले से प्रॉफिट था उससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस एस कर देंगे, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते, बहुत आसानी से हम इस तरीके से कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना भाई प्रॉफिट को। I think I am getting some error. I think this is just a spelling mistake. I think we don't have anything profit. We have answer. Oh, I'm getting wrong answer. Mhm. So prices of I, ठीक है, और S is what, our cost price. If it is greater than answer is what, minimum, ठीक है, then it will be prices of I minus answer. So basically make one variable name profit is equal to prices of I minus S, and answer will be max of answer comma profit. Still I'm getting error. I think there is something missing. Missing. Yeah. So what I'm doing wrong in this, but this is very quite easy question, yeah. So n is of course take है, s is price of 0, that is the way I bought something at the, if s the price of I, if s is greater than price of I, then we can do something like that. I was doing a very fundamental mistake here. हाउ वी कैन डू दैट यार, बेसिकली हम इस क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करें इस तरह से हमने आपको बताया था। सो क्या हम कर रहे हैं,
अगर 7, हमने पहले क्या सिलेक्ट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस 7 होना चाहिए, बट हमने देखा कि अगर उससे आगे क्या है कि 1 है मतलब 7 उससे 7 से छोटा है, तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते हम 1 रुपये में ही खरीद लें, तो हमें सस्ता पड़ेगा ना। और हम 1 रुपये में अगर खरीद लेते हैं तो आगे उससे अगर कोई छोटा नहीं मिलता तो हम उसको कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं, नहीं मिलता उससे बड़ा मिलता है तो हम चेक करेंगे प्रॉफिट कितना है, और जहाँ से हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा उस हिसाब से हम आंसर को अपडेट कर देंगे। बेसिकली हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं जिसमें हम सेलिंग प्राइस से माइनस कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा है, और हम उसको पहले वाले प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हैं। एंड इफ आर गेटिंग द ग्रेटर प्रॉफिट एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्रॉफिट, देन वी आर अपडेटिंग द आंसर एंड we will return that particular answer. So this is quite important questions, and there is very fundamental thing that we have to that we can apply the greedy approach here, because we are trying to find the optimal solution in the neighborhood. So it is just we are trying to find the local optimal solution, and the local optimal is the global optimal in this particular case. So this questions can be beautifully solved using the greedy approach also. So let's move to the next question. I do have solved 1 2 3 4 5 6 7 8 questions, and now let's move to the best time to buy and sell stock too. So it would be something good as compared to the previous one. So in this particular questions, we are provided a question that is we are given a integer array prices and prices of I. I am just trying to see how the life is going on. Good as compared to yeah, it's working fine. Questions, we are provided a question that is we are given a integer array prices and prices of I. I'm just trying to see how the life is going on. Good as compared to the previous working fine. Questions, we are provided a question that is we are given a so let's try to solve this particular question also. So best time to buy and sell stock too. We are given our integer array prices and prices of I is the price of a given stock on the ith day. On each day we may decide to buy and sell a stock. We can only hold at most one share of the stock at a time. So however you can buy it then immediately sell it on the some another day. So वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमें एक दिन खरीदना था, किसी अगले दिन बेच देना था। बट यहाँ पे क्या है, हम खरीद सकते बेच सकते खरीद सकते बेच सकते हैं। तो ये डायनेमिक व्यापार है और वो स्टैटिक व्यापार था, और यू कैन से द हॉरिजन ऑफ दैट पर्टिकुलर business was quite narrow, but here the horizon or the diversity or you can say the variance of this particular business is quite more as compared to that one. So let's try to solve this particular question. So let's find the size of this particular array. ठीक है भैया, फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे क्या किया है, जैसे एक हम एग्जांपल को देखते हैं 7 1 5 3 6 4, ठीक है। तो साइज इसकी कितनी है, 3 3 6, ठीक है। एंड वी हैव बाइट समथिंग ऑन डे 2, प्राइस 1 एंड सेल इट ऑन डे 3, ठीक है। ऑन डे 3 प्राइस इज हाई, ठीक है। एंड द प्रॉफिट इज 5 - 1 दैट इज 4, ठीक है। एंड देन वी बाइट ऑन द डे 4 एट द प्राइस of 3 and sell it on day 5 at the price of 6, and we have made profit, that is 3, ठीक है, ठीक है। we have made profitable, so profitable. So let's initialize one, that is answer is equal to what, and oh not really, you can say answer is 0 also, ठीक है। Let's run loop. This is good question. So let's initialize our selling point as prices of what, 0, ठीक है। if is greater than prices of I, तो हमें महंगा क्यों खरीदना भाई, हम सस्ता कर देंगे ना। तो हम क्या करेंगे, सस्ता, प्राइसेस ऑफ I, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन 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 लेकिन
लेकिन और अदर केसेस में एल्स profit is what? Selling price prices of y minus what? Prices of minus s. ठीक है, prices of s minus s is what? Our cost price. ठीक है, so answer would be maximum of answer comma profit. नॉट रियली, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आंसर प्लस इज प्रॉफिट, क्योंकि हम कितने बार खरीद सकते हैं, कितने बार ही बेच सकते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि हम इसके बाद भी हमें खरीदना है। ठीक है, हमें इसके बाद भी खरीदना है, तो हमें खरीदना पड़ेगा। तो हम एस को क्या कर सकते हैं, एंड मैक्स, तब यहाँ पे आएगा तो दूसरे प्राइस आएगा, उससे बड़ा होगा तो इनिशियलाइज हो जाएगा प्राइस से, फिर आगे बढ़ेगी अपनी जर्नी। और हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट प्रॉफिट इनिशियलाइज प्रॉफिट को ऐसे कैसे प्रॉफिट, रिटर्न प्रॉफिट नहीं की है, आंसर रिटर्न करो। तो प्रॉफिट क्या रिटर्न करोगे, कमाए हुए पैसे वापस नहीं देते, आप आंसर रिटर्न करो, प्रॉफिट नहीं। अरे भाई ये स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तुम्हारे इतना ज़्यादा। I think I'm doing something wrong. I have, मुझे व्यापार करना नहीं आता भाई, मैं काफ़ी गलत रिटर्न मैंने वापस करी। 1 रुपये में खरीदा, 2 रुपये में बेच दिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने स्लाइस कर दिया उससे, फिर 2 मैक्सिमम है तो ऑफकोर्स 3 रुपये में आया, 3 रुपये में फिर 4 रुपये बेच दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 3 रुपये में आया, 4 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेच दिया। 3 रुपये में 4 रुपये में बेच दिया, फिर 5 रुपये में खरीद ही नहीं सकता। 3 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में मैं बेचता, सो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू व्हाट कि 3 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेच दे। तो हमें ऐसे नहीं बेचना चाहिए, नहीं, ठीक है, हमें ऐसे नहीं बेचना चाहिए। वी आर सपोज टू सेल इट quite emphatically and emphatically. So let's have a look, हम इसको मॉडिफाई करना, हमने यहाँ पे गलती क्या करी है, हम उसको क्या कर रहे हैं दिखाते हैं मैं आपको। 1 रुपये में खरीदा, 2 रुपये बेच दिया, फिर 3 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेच दिया। ठीक है, हम उसी दिन नहीं खरीद सकते, हमें उसके आगे बेचना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे कि हमें भी खरीदने बेचने में मजा आए और उन्हें भी खरीदने में मजा आए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अपने सॉल्यूशन को एडिट करते हैं। ये तो वही रखने दो। प्रॉफिट इज एस ऑफ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, फिर हम बनाएंगे एंड रेस इज इक्वल टू एंड मिनिमम। ठीक है, इज इक्वल टू
मैक्सिमम ऑफ रिस्क प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट ही देख लेते हैं ना भैया, क्यों? बात तो सही है भाई, बात सही है ना भैया, मैक्सिमम प्रॉफिट देख लेते हैं, क्यों? ऑफ कोर्स, ठीक है। रिस्क इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिस्क कॉमा प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 रुपये में खरीद रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपये में खरीदे और 3 रुपये बना, यहाँ पे क्या किया इसने, 1 रुपये में खरीदा है और डे 3 में 5 रुपये में बेच दिया है, तो प्रॉफिट कमाया कुछ, ठीक है। फिर 3 रुपये में खरीदा समथिंग, लेकिन हम 1 रुपये में खरीदे और इस तरह से बेच दें। आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग and we are trying to solve it. Let's have a look. I think I'm getting some error in this particular question. So, live में question solve करना is difficult as compared to solving at our comfort zone. So I think approach is absolutely correct of this particular question. So, but in spite of that, also I'm getting some error due to something that I'm not aware of. So yeah, it got accepted. I think I'm supposed to write it before because it should change the check the condition first. Yeah, our bit is 100%. So basically I do have solved this particular question. So हमने सोच क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, हमने क्या किया है कि हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, किसी दिन खरीदें और किसी दिन बेच सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अगर 1 तारीख को खरीदें तो 5 तारीख को हम तभी बेचेंगे जबकि इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो हम क्या उस दिन खरीद करके अगले दिन बेच सकते हैं। लेकिन हम एक को खरीदे, 5 आया, फिर यहाँ पे मान लीजिए 6 होता, तो हम एक को खरीदे 6 को बेच देते हैं।
तो बात बराबर ही होता है, एक को खरीदते 5 को बेचते, 5 को बेचने के बाद फिर 6 को बेचते। तो इसलिए हम क्या किए, एक को खरीदे, चेक किया हमने कि 5 है, 5 के आगे का नंबर क्या है, इससे छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो हम क्या किए 5 को बेच दिए, 5 को बेचे, प्रॉफिट क्या 4 का मिल गया। और इसके आगे आए फिर हम 3 को फिर खरीद लिए, और फिर हम क्या किए 6 को बेच दिए, 6 को बेचने की आगे क्या चेक किए हम कि आगे क्या जो 4 है इससे छोटा है बड़ा है, छोटा है, तो ऑफकोर्स हम बेच सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा, तो हमने बेच दिया, तो हमें जो प्रॉफिट मिला मिल गया। बस इन दिस पर्टिकुलर केस क्या किया, एक को खरीदे, 2 को बेच दिए, क्योंकि 2 इससे क्या है तुम्हारे पास बड़ा है, लेकिन नहीं बेचेंगे हम 2 को, क्योंकि यहाँ पे चेक करेंगे 2 के बाद क्या है 3 है, तो हम एक को खरीद के अगर 2 को बेचते फिर 3 को खरीदते तो हमारे पास क्या नुकसान हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, एक को खरीदिए, मान लो 2 को बेच दिए, तो हमारा प्रॉफिट क्या एक का है, फिर 3 को खरीदे, 4 को बेचे, प्रॉफिट क्या है एक का है, तो 1 + 1 2 का प्रॉफिट है। लेकिन हम एक को खरीदे और 3 को बेच, 3 को भी नहीं बेचेंगे क्योंकि 3 के आगे नंबर है जो 4 जो इससे बड़ा है, तो हम वो देखेंगे। फिर 4 को भी नहीं बेचेंगे क्योंकि 4 के आगे भी जो नंबर है 5 उससे बड़ा है, तो एक को खरीद के अगर हम 5 को बेचते तो हमारे पास प्रॉफिट 4 आएगा। तो ऐसे में पास प्रॉफिट 2 आ रहा था, इससे हमारे पास प्रॉफिट 4 आ रहा है। तो दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज बेटर, और हमें जो मिला है बीट मिला है वो भी 100% है। सो दिस इज क्वाइट एफिशिएंट एंड क्वाइट ऑप्टिमाइज अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो 100% बीट था हमारे पास। थैंक यू वेरी मच। सो अब हम कितने सवाल सॉल्व कर चुके हैं, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल हमारा है जंप गेम। जंप गेम, भैया जंप ना करो इतना। सो थोड़ा सा भैया आराम कर ले, हम अपना लाइव देख ले कैसा जा रहा है। Let's try to solve this particular question also. So best time to buy and sell stock too. We are given our integer array prices. So let's try to solve this particular question. I think this is a quite good question, and this question is very important as far as PCB's interview is concerned, because this particular question got asked in so many PCB's interviews that I've heard from my friends, families, and instructors and mentors. So let's try to explore this particular question also. So you are given here an integer array nums, and we are illustrating position at the array's first index, and each element in the array represent your maximum jump length at that particular position. So क्या है हमारे पास, return true if you can reach the last index, or false हमारे पास क्या है, you are given an integer array nums, you are initially positioned on an array's first index and each element in the array represent the maximum jump length at that position। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो मतलब हम यहाँ से ऐसा क्वेश्चन जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसमें क्या है, जंप 1 स्टेप फ्रॉम द इंडेक्स 0 टू इंडेक्स 1, देन 3 स्टेप टू द लास्ट इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू आर गिवन इंटीजर, यू आर इनिशियली पोजीशन इन द फर्स्ट इंडेक्स एंड ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम जहाँ, तो हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि हम मैक्सिमम जंप कितना कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स से। तो हमें ये फाइंड करना है कि क्या हम अंतिम स्थान तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं, क्या पहुंचना संभव है या नहीं संभव है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार, जितनी ज्ञान है थोड़ी बहुत उसके अनुसार। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके भी कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक अप्रोच है और यू कैन से दैट डिजायरेबल और ब्रूट फोर्स के बीच का अप्रोच है, उस तरीके से अगर हम सोचें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम अभी आगे देखने जा रहे हैं। 2 3 1 1 और 4 है, और ये है जंप करने का गेम। जंप करते रहिए और करते रहिए। तो हमें ये चेक करना होगा कहीं पे ये जो इनका जो जंप करने का वो है वो 0 या फिर नेगेटिव में ना आ जाए। अगर 0 आ जाता है इसका जंपिंग पोटेंशियल, तो हम उस टाइम पे हम इसको रिटर्न कर सकते हैं कि फॉल्स होगा। तो हम एक फ्लैग बना लेते हैं, इंट फ्लैग इज इक्वल टू
और ट्रू। ठीक है, छुपी है फल की बारिश हरत नई नई, सुहानी सुबह छुपी है फल की तुम्हारी शहरत नई। I just want to have a glass of water. So. Let's do try to solve the problem यार। हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ। ठीक है, सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई से n बड़ा है एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, हमारे पास टेम्प है। ठीक है, टेम्प को हमने कम कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ नम्स ऑफ व्हाट, नम्स ऑफ टेम्प को यहाँ कम नहीं करना चाहिए हमें, यहाँ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यहाँ पर करते हैं। इफ नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन टेम्प, then temp is equal to nums of I, quite obvious। ठीक है, else तो होता ही जा रहा भाई। else if temp less than equal to 0, then flag is equal to false। भी है फल के गलत आंसर आपका है भैया। यहाँ पे क्या है, हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम हमारे अप्रोच के अनुसार 2, ठीक है, टैम्प या टैम्प को फिर हम क्या गए, टर्म्स ऑफ आई डेट इज 2 इज ग्रेटर देन 2 बराबर है 2 के टैम्प, तो टैम्प इज ग्रेटर नम्स ऑफ आई के हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या किए, ये हमें सबसे पहले ही चेक करना चाहिए। इस अप्रोच के अनुसार आउटपुट हमारा फॉल्स आ रहा है। अगर टैम्प क्या है, लेस दैन इक्वल टू 0 है, देन फ्लैग को फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो सही बात है। अगर नम्स ऑफ आई हमने 2 लिया, 2 को चेक कर रहे हैं, 2 से बड़ा है, बराबर है, तो ठीक है 2 डाल दिया यहाँ पे। फिर हम क्या किए, 2 को एक रिड्यूस कर, एक जंप हम आगे कर गए, फिर 3 से चेक कर रहे हैं। तो नम्स ऑफ आई जैसे 3 क्या है, ग्रेटर देन टेम्प है ऑफकोर्स, तो टेम्प को 3 दे दो। ठीक है, 3 दे दिया। अब क्या किया, इससे आगे गया तो क्या टेम्प कम हो गया, अब 3 से 2 हो गया, 2 अभी भी बड़ा है इससे, तो यहाँ पे आया है तो एक और कम होगा और इसके बराबर अब है, तो एक आ गया हमारे पास, और एक यहाँ से यहाँ पे आ गया अब हमारे पास। तो हमारे पास
एक यहाँ से यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो अब हमारे पास एक है था, ठीक है, एक है, तो एक हमारे पास जंपिंग पोटेंशियल है हमारे पास अभी भी। तो जंप करके हमारे पास एक से यहाँ पे आ गया, तब तो यहाँ पे क्या हो गया, ए टेम्प जीरो हो गया। तो जीरो हो गया, इस कारण से हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स। लेकिन हमें फॉल्स रिटर्न नहीं करना है, हमें अगर लेस देन जीरो हो जाता है तब अगर करेगा तो ज़्यादा बेहतर हो। या सो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बेसिकली इस सवाल में हमने किया क्या है, हमें फाइंड करना है कि क्या ये स्टार्ट, इफ आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन वन, देन क्या ये वहाँ से लेकर के लास्ट तक जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो वी हैव टू ऑब्जर्व समथिंग। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर जैसे हमारे अप्रोच के अनुसार फॉर एग्जांपल टू को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, टू को हमने सेलेक्ट किया, टू को सिलेक्ट किया तो हम क्या चेक करें, टू को असाइन कर दिए हम कहाँ पे, टेम्प टेम्प में। तो टेम्प में हम टू को असाइन कर दिया, फिर हम क्या कर रहे हैं, इससे हम आगे जंप किए, जब इस टू को टू से हमने चेक किया तो यहाँ पे क्या किया, इफ नम्स ऑफ आई अभी क्या है, टू ही है, टू टू के बराबर है, ठीक है, टेम्प को हमने टेम्प में हमने टू डाल दिया, अब जो पहले से हम डाल रखे थे। तो टू से एक जंप किया आगे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्प माइनस माइनस कर रहे हैं, तो थ्री पे आ गए। अब थ्री क्या है, टू से अब चेक कर रहे हैं, अब टेम्प क्या हो गया, थ्री हो गया। तो थ्री हो गया, तो थ्री अब हम चेक कर रहे हैं कि थ्री मतलब थ्री हो गया, अब थ्री माइनस माइनस कर रहे हैं, थ्री से वन पे जंप कर रहे हैं, तो थ्री से क्या होगा, टू हो गया। तो अब हम चेक करें टू क्या वन से बड़ा है, क्योंकि अब वन आ गया, तो हाँ बड़ा है, तो अभी हम टू ही रहेगा। फिर यहाँ से हम जंप कर गए यहाँ पे, तो क्या है, एक फिर से माइनस कर दो टू को, तो टू वन के बराबर हो गया, तो वन वन के बराबर है, हाँ हाँ है। तो वन वन के बराबर है, तो वन इसमें हम वन डाल दिए और फिर हम वन माइनस कर दिए, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जंप कर दिए, तो फोर पे आ गए, मतलब हम डेस्टिनेशन में पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम चेक करो, तो थ्री हमने थ्री जंप हमें मिला, तो एक जंप किए हम यहाँ से थ्री, एक जंप किया, हमारे पास जंप कितना बचा, दो बचा, दो दो के बराबर है, हाँ ऑफकोर्स दो दो के बराबर है। तो हम क्या किए, दो जंप नया असाइन कर सकते हैं, फिर वही रख, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जो जंप हमारे पास अभी है, तो दो से हम एक पे जंप किए, तो हमारे पास दो क्या एक हो गया, तो एक एक के बराबर है, ठीक है। और एक से हमने जीरो पे जंप किया, तो हमारे पास क्या है, अब जंप हमारे पास जीरो हो गया जंप। और हम जब हम यहाँ से जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया जंप, जब माइनस माइनस किया, और हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो अब क्या है हमारे पास, टेम्प नेगेटिव होगा, टेम्प नेगेटिव हो गया, मतलब हम लास्ट तक पहुँच ही नहीं पाए। सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और हमने सॉल्व कर लिया, और हमारी बीट भी काफ़ी अच्छी आई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सो टिल नाउ हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जंप गेम टू। सो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्वेश्चंस की बढ़ती जाएगी, और मज़ा भी आएगा, क्योंकि मैं तो बोर ही हो रहा था भैया बैठ करके, तो मैं सोचा कैमरे के सामने बैठ के सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा मज़ा भी आया, क्योंकि ऐसा लगेगा कि कहीं कोई देख ना ले। सो लेट्स हैव अ फन फन फन। सो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें भैया तो सब जगह काम आता है, इसलिए बिना पढ़े लिख देते हैं थोड़ा कुछ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, यू आर गिवन जीरो इंडेक्स अरे ऑफ इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ n and you are initially position at nums of 0. So each element nums I represent the maximum length of the forward jump from the I. In other word, if you are at nums I, you can jump nums I plus j, where j 0 से j बड़ा है, j से nums of I बड़ा है। यो वन प्लस आई से कुछ 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 है भैया, मैं वो पानी पीने दो, उसके बाद मैं आता हूँ, फिर देखता हूँ ये है क्या। My water bottle is here itself, and I was trying to find it somewhere else. So jump game 2, देखता हूँ लाइव क्या चल रहा है। तो हमारे पास एक यहाँ से यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो अब हमारे पास एक है था, ठीक है, एक है, तो एक हमारे पास जंपिंग पोटेंशियल है हमारे पास अभी, तो जंप करके हमारे पास एक से यहाँ पे आ गया, तब तो यहाँ पे क्या हो गया, ए जंप जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, इस कारण से हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स।
लेकिन हमें फॉल्स रिटर्न नहीं करना है। हमें अगर अगर वन पे जंप करें, ये हम यहाँ से थ्री जंप किया, हमारे जंप कितना बचा, दो। हम यहाँ से जंप करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया जंप। जब और हमने सॉल्व कर लिया और हमारी बीट भी काफी अच्छी आई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सो टिल नाउ हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जंप गेम 2। सो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्वेश्चंस की बढ़ती जाएगी और मजा भी आएगा, क्योंकि मैं तो बोर ही हो रहा था भैया बैठ करके। तो मैं सोचा कि कैमरे के सामने बैठ के सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा मजा भी आया, क्योंकि ऐसा लगा कि कहीं कोई देख ना ले। सो लेट्स हैव अ फन फन फन। सो So you are given a zero array index array of integer nums of length n. You are initially positioned at nums of 0. ठीक है. So each nums I represent a maximum length of forward jump from index I. In other words, if you are at nums I, you can jump from nums I plus j, where j is ठीक है, I plus j से n बड़ा है. ठीक है. Then the minimum number of jump to reach m nums of n1 is n. So यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये नहीं फाइंड करना है कि हम वहाँ तक लास्ट तक जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं. हमें ये फाइंड करना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ जंप में हम वहाँ जा सकते हैं, कितने मिनिमम नंबर ऑफ वन में जंप में. तो क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ जंप टू रीच द लास्ट इंडेक्स इज 2. जंप 1 स्टेप फ्रॉम इंडेक्स 0 to 1. ठीक है, एंड 3 स्टेप टू द लास्ट इंडेक्स. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप क्या है, मतलब कितनी जल्दी हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं. ठीक है भैया, जब आपकी इच्छा ही यही है तो हम आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं, और मैं इसका अपमान तो कतई नहीं करूँगा. और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है. मिनिमम नंबर ऑफ कितना जंप होगा रिक्वायर्ड. ठीक है, हो भैया आगे बढ़ते हैं. सो हमने एन क्या साइज हो गया उसका, एंड आंसर बना लो जिसका हो जाएगा एंड मैक्स. ठीक है, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 आई से एन आई प्लस प्लस. ठीक है, बना लिया. अब है क्या, मिनिमम ऑफ जंप, मिनिमम नंबर ऑफ जंप, मिनिमम नंबर ऑफ जंप, जंपा जंपा, एडम जंपा, एडम जंपा, एडम जंपा. हम रिफिल करेंगे अपने आप को, रिफिल 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 रिफिल. हमारे पास मैक्सिमम जंपिंग पोटेंशियल होना चाहिए, जहाँ पे भी हम हो हमारे पास मैक्सिमम जंपिंग पोटेंशियल होनी चाहिए. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. इसी की तरह यहाँ पे भी हम इसको असाइन करते हैं 0. ठीक है, जंपिंग पोटेंशियल इसकी ज़्यादा अगर है, ज़्यादा जंप कर सकत है तो हम इसको रखेंगे. लेकिन वहाँ से ही अगर देखेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा इसकी जंपिंग पोटेंशियल है, क्या स्लाइस करना ना करना, क्या इसकी उसकी बात है, हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा. सो इट इज़ नॉट दैट फ्रैंकली स्पीकिंग. सो मुझे लगता है मेरे को थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए. तो 10 मिनट का मैं रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. There is no any camera shutter, so I will try to test something like that here.
So I'm back. Let's try to solve this particular question also. So यहाँ पे हमारे पास I think uh, so I'm refreshed now. Let's have a so इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें फाइंड करना है कि मिनिमम जंप कितना लगेगा, ठीक है। तो टेम्पो ऑफ जीरो में कर दिया, एक इंट डिस्क बना दो, इसमें क्या कर दो, डाल दो 1 से 0 डाल देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, टैम्प में क्या कर दिया, टैम्प में नम से 0 डाल दिए, ठीक है। टैम्प मत बनाओ यार, और टैप में टम टम एंड मिनिमम करना, ठीक है। तो ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सा सॉल्यूशन मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, so basically we are concerned of finding something that is this way can be solved, and this is not something extraordinary. We can solve it quite emphatically. So सॉल्व करते हैं। टेम्प को हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि टैम्प हम अपडेट करते रहेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, टैम्प इज इक्वल टू बस मैक्सिमम ऑफ टैम्प इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टैम्प इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टैम्प कॉमा आई प्लस नम्स ऑफ आई, ठीक है। So I'm doing something mistake here. So the mistake is what I'm trying to figure it out. हमें n-1 तक जाना है एक्चुअली, तो हम वहाँ तक हम इसको ले ही क्यों जाए। Of course it is correct. सो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम एक टेम्पररी बना दिया हमने, जीरो पे साइन कर दिया उसको। हम चेक कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 2 पे है तो इसके इंडेक्स प्लस मैक्सिमम जंप कर सकता है, तो वही है ना कि जहाँ तक वो जा सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे 0 2 पे है, इंडेक्स का ऐसा 0 है, 2 + 0 क्या है 2 होगा, ठीक है। तो ये 3 और 1 यहाँ तक जा सकता है, थर्ड इंडेक्स मतलब सेकंड इंडेक्स तक 0 1 2, और 2 0 पे है तो 2 मैक्सिमम जंप कर सकता है, तो 2 इंडेक्स मैक्सिमम जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ पे है तो वहाँ से 1 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे अगर जंप करता है 3 पे जाता है तो यहाँ से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, दैट इज़ 1 + 3 4 तक जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक जंप यहाँ से यहाँ लेंगे और एक जंप फिर यहाँ से यहाँ ले लेंगे, तो यही है ना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे, फिर अगर रिस हमने 0 से इनिशियलाइज किया तो एक जंप क्या यहाँ से यहाँ तक करेगा कहीं पे,
तो यहाँ से अगर यहाँ तक जंप कर रहा है तो 1 तक मान लो जंप कर लिया, 1 तक जंप कर लिया तो हमारे पास तब तक मैक्सिमम टेम्पररी क्या है, हमारे पास 4 है, तो 4 तक जंप किया जा सकता है। तो फिर अगर 4 इंडेक्स तक जंप कर गया तो लास्ट तक पहुंच गया, मतलब जितना कितना जंप टोटल करेगा, 2 जंप टोटल करेगा। तो उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। सो बेसिकली हम वही कर रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक जंप कर सकता है, और अगर मैक्सिमम जंप करने की कैपेसिटी अगर उस इंडेक्स तक हो जाती है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब अपने आंसर को अपडेट कर देंगे और 1 से इंक्रीज कर देंगे। सो दिस इज द वेरी फंडामेंटल कोड एंड दिस इज क्वाइट इजी अप्रोच as concept is concerned, and it's quite important question, I think. So we have solved this particular question also. So till now we do have solved so many questions here. So let's move to the next question. So here we are concerned of finding h index. We have solved 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 questions. So here h index, given an array of integer citations where citations of I is the number of citations a researcher received on their ith paper, return the researcher's h index. We are supposed to find the h index of the researcher. According to the definition of h index on Wikipedia, the h index is defined in the maximum value of h such that the given researcher has published at least h paper that has been cited at least h times. So here in this particular question, the number of citations, the number of paper, the researchers h index. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. So h index is the maximum number of yes, the given researchers publish at least h papers that has been cited at least h times. So h paper है और cited at least h times है. So it is the citations and citation number of citations I paper. ठीक है ठीक है. तो maximum number इसका size is 5 and maximum number of citations it has received, that is 6. So it is the maximum value of S that is given is published as S papers that have received at least H number of times. ठीक है ठीक है ठीक है. Means that researchers have published 5 papers in total and each of them have received 3, 0, 6, 1 and 5 citations respectively. The researchers had 3 papers which has at least 3 citations, ठीक है, each, and the remaining 2 with more than 3 citations each. Their H index is 3. No more than 3 citations. ठीक है. तो हमारे पास क्या इसमें पहले फाइंड क्या करना है कि रिसीवर्स क्या है, उसको एटलीस्ट एच साइटेशंस मिला हुआ होना चाहिए और एटलीस्ट एच पेपर्स उसने पब्लिश कर रखा होगा. ठीक है. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी.
सो हमें कुछ एरर मिल रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम की जगह हम इसको वन से इनिशलाइज कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशंस वन तो हो सकता है। स्टिल आई एम गेटिंग एरर, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो जीरो है तो नंबर ऑफ साइटेशंस के अनुसार 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 वन साइटेशंस, ठीक है, इसको इनिशलाइज जीरो से ही करें। CITATIONS, साइटेशंस ऑफ आई नहीं, साइटेशंस ऑफ जीरो। स्टिल देयर इज एरर, जो कि हमें मिल रहा है, जो कि हमें नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। साइटेशंस ऑफ आई से क्या हमारे पास आउटपुट वन आ रहा है, प्लस आउटपुट हमें आउटपुट वन आना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेक्टेड टू है साइटेशंस पब्लिश एट रिसीव इतना साइटेशंस, ठीक है। सो ठीक है। have received at least itna citations, have received, the people have to have received at least itna citations. I think I'm doing something wrong in this particular case. मैंने कोई टेस्ट केस मिस करा है यहाँ पे। So yeah, it got accepted. So but I do have missed some test cases here, and I'm trying to figure it out how what I have missed. I do have solved 14 or 15 questions in a row, so I'm losing concentration also. So basically, int h index factor of int citations were provided. N is the citation size, h and all everything. So at least minimum of itna we are required to find. So if citations of I say n बड़ा है, ठीक है, citations of I say n not required, not really required, minimum number of वो होना चाहिए, not required actually, citations of I से n minus वन, n minus I बड़ा है, I कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n क्या है अपने पास, n minus y बड़ा है, तो आंसर इज इक्वल टू citations of I, not really, not really. It is not required. Citations of I say n minus 1 is
नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, क्योंकि साइटेशंस ऑफ आई क्या है, अगर कहीं पे 11 साइटेशंस हो चुका है एंड n-i समथिंग डिफरेंट, सो हम क्या कर सकते हैं, वी आर सपोज टू फाइंड समथिंग। 11 साइटेशंस हो चुका है, ठीक है, उसका यहाँ पे पास तो आएगा ही, ऐसे मान लो 1 है, ठीक है, 1 साइटेशंस एंड एशियन नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट इतना साइटेशन, लेट्स पीपल हैव गॉट इतना साइटेशंस, ठीक है। मैं कंसंट्रेशन लूज कर रहा हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से लगातार सॉल्व कर रहा हूँ। इट इज़ फेलिंग ऑन सम टेस्ट केसेस, यहाँ पे मेनली क्या 11 है, 11 ठीक है, 11 क्या साइटेशन से n-i, नहीं बड़ा नहीं है, नहीं बड़ा नहीं है, ठीक है। सो इज इट अ रिक्वायर्ड कंडीशन कि बड़ा होना चाहिए? इफ citations of I is greater than, आई थिंक दिस इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन, कुछ एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ बेसिकली। सो क्या ये रिक्वायर्ड है क्या, एट दिस एज पीपल शुड हैव गॉट इतना नंबर ऑफ साइटेशंस, ठीक है, बट हम यहाँ पे तो उसका कंसिडरेशन ले ही नहीं रहे। I think I'm missing something. I will try to solve it.
there is some mistake and this mistake will not be tolerated at any cost. So basically this particular case is citations of how good things have been is not possible to get that. See, if citations of I is greater than n minus I, then maximum is n minus I, but I do have sorted it, so I 6 would be at last. ठीक है. So citations of I is of course greater than this particular case. So answer would be maximum of answer comma n minus I. आंसर क्या हमारे पास होगा, सॉर्ट कर रखा है हमने, ये तो कहीं से नहीं आना चाहिए. अगर आप कंसंट्रेशन लूज करते हो तो एक आसान सा क्वेश्चन भी मुश्किल लगने लगता है. सो दिस इज़ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई डू हैव सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस. सो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एच इंडेक्स वो होगा जिसमें मैक्सिमम एच नंबर ऑफ पेपर पब्लिश हो गया हो और एच नंबर ऑफ पेपर को मिनिमम एच साइटेशंस मिल गया हो. So अगर हम एक एग्जांपल से समझें, so basically we are provided a citations array where we have cited number of citations for ith paper. For example, this particular paper, for paper number 1 have got 3 number of citations, paper number of 0 has got 0 number of citations, 1 have got 0 number of citations, paper number of 2 have got 6 number of citations, paper number of 4 have got 1 number of citations, paper number of 5 got 5 number of citations. So basically I do have sort all the citations in ascending order, right from the very small to the highest citations. So for the citations number of 0, so at least 0 number of people, paper have got 0 citations, of course it is true. So we are just taking citations of I, so that citations 0, that is 0 is greater than n minus I, that is of course 4, so it is not greater. So हम दूसरे पे जाएंगे, then we have maximum answer comma citation. Citation of I is 0 and answer is 0, so maximum is 0. So till now our citations और index each index is 0. अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1 पे आते हैं, तो 1 पे अगर हम चेक करेंगे, सो 1 पे क्या है हमारे पास, 1 पे हमने चेक किया साइटेशंस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन n माइनस 1, नहीं ऐसा नहीं है. तो हम क्या करेंगे, आंसर इज मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा आई, तो 1 हो जाएगा हमारे पास आंसर. को इसी तरह से क्या है 3 पे आए, 3 पे आए तो क्या 3 साइटेशंस ऑफ आई इज ग्रेटर देन इतना, तो नहीं साइड दोनों बराबर है, तो मैक्सिमम ने साइटेशंस कर लिया, डेट इज हमारे पास 3 आ गया. फिर अगेन हम आगे आते हैं, अगेन हम क्या 5 है, 5 क्या है, 5 माइनस समथिंग से बड़ा है, ऑफकोर्स हाँ बड़ा है, तो हम क्या लेंगे मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा n माइनस आई. तो इसकी इंडेक्स देखते हैं हम क्या है, इसकी इंडेक्स क्या होगी 0 1 3 और 5 and 6. सो इसकी 0 1 2 3, इसकी इंडेक्स 3 होगी. टोटल क्या है अपने पास n इज टू 4 है, सो n माइनस दैट इज 1. सो हमारे पास मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आंसर इज टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा 1. सो हमारे पास पहले से आंसर 3 है, और अभी क्या आ रहा है साइटेशंस ऑफ आई हमारे पास क्या, मतलब हमारे पास ये क्या आ रहा है n माइनस आई क्या आ रहा है, डेट इज़ 1. सो हमारे पास आंसर क्या है अभी, मैक्सिमम ऑफ 3 को 1 क्या होगा 3 ही रह जाएगा. सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारे पास अच्छा बीट आया. सो इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव सॉल्यूशन, क्वाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. बेसिकली वी हैव टू अप्लाई सम बेसिक एनालॉजी इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. हमें इस क्वेश्चन को समझना होता है किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं. साइटेशंस मेनली वही है कि मिनिमम नंबर ऑफ पेपर, मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशंस, कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पेपर को मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशंस मिला. फॉर एग्जांपल अगर हमारा साइटेशन है ईच इंडेक्स 3 है, तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 पेपर को 3 या 3 से ज़्यादा साइटेशंस मिला हुआ होना चाहिए, वही हमारा एच इंडेक्स होगा. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइटेशंस कितने नंबर ऑफ पेपर को मिला है. फॉर एग्जाम्पल हमारा एच इंडेक्स 6 है, डैट मीन्स कि 6 पेपर को मिनिमम 6 साइटेशंस मिल चुका है, और इसको सॉल्व करने का ये रहा कोड. एक काफ़ी सिंपल कोड है, और मैं अब अपना कंसंट्रेशन थोड़ा लूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लगातार ही सॉल्व करते जा रहा हूँ. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या है, हमें फाइंड करना है मीडियम दर्जे का सवाल है, एक प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ. हमें
सारे अरे का प्रोडक्ट निकालना है अपने आप को छोड़ करके, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोवाइडेड है 1 2 3 4, तो हम एक को छोड़ करके बाकियों का प्रोडक्ट निकालें तो 4 4 12 24, ठीक है। 2 को छोड़ करके बाकी को प्रोडक्ट निकालें 3 3 4 12, ठीक है। 3 को छोड़ कर बाकी को निकालें 2 4 जाए, ठीक है। एंड 4 को छोड़ कर 3 6 1, 6 और 6 और 1 6, ये ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग इनिशियलाइज कर लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग और टेम्प वेरिएबल, ठीक है। वेक्टर ऑफ एंड आंसर, ठीक है। एंड एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। सारे का प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है। फिर से एक लूप बनाओ, टेम्प को निकाल दो भाई, क्योंकि उसने हमने लॉन्ग लॉन्ग से इसीलिए इनिशियलाइज किया था। जीरो से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे चेक भी कर लेना होगा कि जीरो कितने बार आ रहा है, ठीक है। अगर जीरो एक ही बार आया है, देन हम क्या करेंगे, उस पूरे के पूरे उस पर कोई रेस हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, आंसर में पूरे के पूरे को ही डाल देंगे, पूरे के पूरे प्रोडक्ट को डाल देंगे, ठीक है भाई। क्या प्रोडक्ट अपने पास है, नम्स ऑफ आई एन, प्रोडक्ट अपने पास क्या है भाई, टेम्प है, ठीक है। पूरे के पूरे टेम्प को डाल देंगे। लेकिन एल्स इफ काउंट अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक से ज़्यादा बार जीरो आ रहा है, मतलब एक जीरो उसके अलावा ही बचेगा ना, तो पूरा का प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आंसर डॉट पुशबैक जीरो, ठीक है। रिटर्न आंसर। ये कितना क्या कितना बाजी, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आई थिंक लॉन्ग लॉन्ग कुछ ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग हो जा रहा है। सो बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, टैम्प इजकल टू टैम्प को हमने 1 से इनिशियलाइज करना है भैया। क्या कर रहे हो तुम अंकित भाई, ऐसा नहीं करना होता भाई। सो बेसिकली हाँ पाजी, टैम्प को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ठीक है। बाकियों के लिए तो जीरो आएगा ही जीरो, बट जीरो के लिए क्या होगा, जीरो के लिए तो जीरो नहीं है भैया,
काउंट क्या है, काउंट अगर काउंट क्या है, नम्स ऑफ आई अगर जीरो है देन काउंट प्लस है जी। ठीक है, तो काउंट क्या है, काउंट अगर एक या एक से छोटा है, ठीक है जी, देन क्या कर दो, टेम्प को नहीं डालना जी। देन क्या करो, देन क्या करो कि उस टाइम पे हमारे पास टेम्प तो जीरो को छोड़ करके होना चाहिए, नहीं, जीरो को छोड़ करके जो हमारे पास नंबर है पूरा का पूरा, उसका क्या है होगा। ठीक है, उसका भी एक अलग से हम प्रोडक्ट निकाल के रख लीजिए। सुपा जी, ये भी सवाल अब अपन सॉल्व के देता है। So basically in this particular questions we are required to find the product of array except self. So we are provided a set of array and we are supposed to find the product of each and every element without itself. For example, if you are provided 1, 2, 3, and 4 and we are supposed to return the product of all the numbers except 1 at the index 0. So basically in this particular case, if you not multiply 1 and will multiply all the other numbers, then we will got 2 into 3 into 4, that is 6, that is 24. But if you proceed to index number 1 where there is 2, then you will ignore that particular 2 and will multiply each and every other number other than 2, then we will get 12. So in this particular case we have to take care that first of all your time complexity should be big of n, and we have to take handle some of the exceptional cases when there will be zero, then we cannot divide with the two because you have find out we have found out that the whole array, and we thought that we will divide that particular number which we are trying to ignore. So if it would be zero, then you cannot divide that the whole set of array with zero. So in this particular case we have to return the product of other numbers other than zero. So, but there is a twist. If there will be double zero, then this particular case there will be a product of all the other number that will be zero. So we are not required to find the product of the array. We can return direct zero because if there is more than one zero, then the product of all the other numbers, all the answer would be zero. Understood? So if there is will be more than two zero, then सारे के सारे number zero होंगे. But if there is one zero, then we have to return the product of all the numbers ignoring zero. So we have to take care of the cases where we are required to divide it with zero, because division with zero is not feasible. It will give error because it is infinity, and infinity is beyond the scope of the C++ compiler because it is not defined in C++. It would not
yeah, it would not handle something like zero. So we have to handle this particular case by yourself, and I do have solved each and every uh, this particular question step by step. So go through this particular question and you would find it quite easy. So हम आगे बढ़ते हैं कि how we can solve all the other questions. I do have solved more than 15 16 questions in 1 or in 2 hours. I do have solved 16 questions in 2 hours. So but now I will move forward to another question. I do have solved 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 questions, and now move to the next question, that is gas index. It is also a medium number of question. So I got exhausted, but अपने को रुकना नहीं है, मजे करने हैं भाई, ये तो मजा है भाई। हाँ, मजा है, मजा है भाई, मजा है। There are 8 gas stations along a circular route where the amount of gas at the ith station is gas I. We have a car with an unlimited gas tank and its cost I of a gas to travel from the ith station to the next I plus 1 station. We begin the journey with an empty tank at one of the gas station. Given two integer array gas and cost, return the starting gas in station index. If we can travel around this circuit once in a clockwise direction, otherwise return minus 0. If there is exists a solution, it is guaranteed to be unique. ठीक है भैया, देखते हैं सॉल्व करके होता है कि नहीं होता भैया। देखते हैं भैया लाइव कैसा चल रहा है। लाइव 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 भाई बहुत टाइम से सॉल्व कर रहा हूँ और अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है। देखते हैं भैया लाइव कैसा चल रहा है। लाइव 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 भाई बहुत टाइम से सॉल्व कर रहा हूँ और अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है। देखते हैं भैया लाइव कैसा चल रहा है। लाइव 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 भाई बहुत टाइम से सॉल्व कर रहा हूँ और अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है। चलिए ये भी सवाल देख लेते हैं। गैस स्टेशन है, वी आर प्रोवाइडेड ए नंबर ऑफ गैस स्टेशंस. Well, amount of gas at the ith station is gas I. We have a car with an unlimited tank, and its cost I of gas to travel from ith station to I plus one station. So you begin with empty tank at one of the gas stations, given a two integer gas and cost, return the starting gas stations if you can travel around the circle in clockwise direction, otherwise minus one. And if it is feasible to travel through the circular path, then it would be unique solution. So we are required to find the amount of what we are required to find 20 return the starting gas stations, and then if you can travel around the wanted to cover. So start at gas index 3 and fill up tank 4 of gas. Your tank 4 0 plus 4. ठीक है, then you would be able to travel through that. 4 minus 1. ठीक है, put aside, that is it. If you will start from the index 1, then it would not be feasible for you to travel. So you are supposed to return the. You are supposed to return the starting index from where we would start to travel the whole. But how is it possible to be unique? Also, it cost if there is any limitations of money. So if you'll start at station 3, ठीक है, started at station 3 and filled up with 4 unit of gas in this 3 0 पे, ठीक है, फिर 4 into the gas, your tank is 0 plus 4 time to travel to station 4, your tank is 4 minus 1 4 minus 1 plus 5 ठीक है, at station 0 to station
0, ठीक है, it would cost 8 minus 2, so it is actually the cost, ठीक है. So let's solve. I think this question is quite good. वन माइनस थ्री क्या सौ फाइव, ठीक है, वन माइनस थ्री नहीं, टू माइनस फाइव नहीं, थ्री माइनस फाइव. This is not a difficult question. I can solve this particular question, but I'm getting also exhausted यार. आंखें सामने ब्लर होने लगा है क्योंकि मैं 2 2.5 2 घंटे से लगातार स्क्रीन को देख रहा हूँ. 2 घंटे में 16 सवाल सॉल्व कर चुका हूँ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन. I'm getting a little bit exhausted, so let's have a break.
सो भैया इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए फिर से। गलती कहाँ पे आप कर रहे हैं ये देखा जाए। हम टेम्पररी को स्टोर करा के रख लेते। टेम्प इजकल टू टेम्प प्लस गैस ऑफ आई प्लस गैस ऑफ आई माइनस कॉस्ट ऑफ आई। ठीक है भाई, गैस ऑफ आई माइनस कॉस्ट ऑफ आई। ठीक है, अगर हमारे पास जो बचा फ्यूल है वो बचा कैपेसिटी हमारा जो है, अगर वो 0 से कम हो जाता है देन हम इस इंडेक्स से तो नहीं जा सकते हैं, इतना श्योर सी बात है। देन हम क्या करेंगे, एक बना लो जहाँ से स्टार्ट हमने कर रहा है, कहाँ से हमने स्टार्ट करा करेक्ट करेंगे हम। स्टार्ट इस करके हो जाएगा देन बस, फिर वहाँ से तो नहीं करेंगे, उसके आगे से हम कर सकते हैं। ठीक है, एक और हम कर सकते हैं हम। फिर हमारे पास रिजल्टेंट कितना है, दिस इज टू रिजल्टेंट प्लस टेम्प हो जाएगा, और हमारे पास टेम्प इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक कर देते यार, टेम्प को टैंक लिख दो। Basically, I think there is still mistake. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जस्ट देयर वाज लिटिल बिट कंफ्यूजन ओनली। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास कॉस्ट आई दे रखा है और गैस आई दे रखा है। हमें आई थे स्टेशन पर अगर हम गैस लेते हैं तो हमें आगे जाना है, तो कॉस्ट आई जो होगा उस आई से स्टेशन का जो कॉस्ट होगा, आई से आई प्लस 1 जाने में उतना कॉस्ट हमारे पास कट जाएगा। तो हमें चेक करना है कि किस स्टेशन से हम शुरुआत करेंगे कि हम आगे पहुंच जाए। तो हमने क्या करा है कि स्टार्टिंग इंडेक्स बना दिया जिसमें 0 से उसने स्लाइस कर दिया है, और टेम्प वेरिएबल बनाया है। टेम्प वेरिएबल 0 से इंस्टाइज किया, उसमें मैंने क्या किया है, हमारे पास बचा हुआ कितना है वो हम उसमें स्टोर करेंगे। तो गैस आई मान लीजिए हम यहाँ से गैस भरा है, जैसे कि यहाँ पे कितना तीसरे स्टेशन से तो 4 यूनिट गैस ली और आगे जाने में 1 यूनिट आया, हमारे पास बचा कितना, तो टेम्प उतना है। तो टेम्प हमारे पास बचा 3। अगर 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से स्टार्ट तो नहीं कर सकते। जैसे कि हम 1 से गैस लेते तो आगे जाने में 3 का खर्चा हो जाता है, तो लेस हम इनएफिशिएंट गैस हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए आई प्लस 1 पे जाएंगे, जैसे 2 पे जाते हैं हम। तो और 2 पे 2 और क्या करते हैं, रिस्क क्या करते हैं, रिस्क क्या है हमारे पास, टोटल रिजल्टेंट गैसेस है हमारे पास। रिजल्टेंट गैस कितना है, टेम्पररी हमारे पास कितना है, यहाँ पे -2 आया है। ठीक है, टेम्पररी -2 आया, रिजल्टेंट क्या है -2, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और टेम्पररी को हम 0 से फिर से सेट कर देंगे। और रिजल्टेंट प्लस टेम्पररी, टेम्पररी हमारे पास कितना है 1,
ठीक है। और हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट प्लस टेम्पररी, तो रिजल्टेंट हमारे पास जीरो था, टेम्पररी टेम्पररी हमारे पास क्या था, टेम्पररी हमारे पास वन था, और रिजल्टेंट क्या था, जीरो, तो हमारे पास वन है, अभी तो जीरो नहीं है वो। तो हम क्या करेंगे, अगर जीरो हो जाता है अभी तो -1 रिटर्न करना पड़ता, नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। लास्ट तक जाते जाते हमारे पास वो जीरो नहीं होना चाहिए, हमारे पास कुछ बचा हुआ होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, जीरो से बड़ा हुआ होना चाहिए। और अगर जीरो से कम हो जाता है तो मान जैसे यहाँ पे हम देखते हैं थ्री थ्री से हम स्टार्ट किए, थ्री टू से स्टार्ट किए, तो आगे जाने में क्या फ्यूल हमारे पास थ्री लग रहा है, तो लेस देन जीरो हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम आगे जाएंगे, थ्री पे गए, थ्री से स्टार्ट हम कर सकते हैं, थ्री से स्टार्ट किए तो आगे जाने में फोर लग गया, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या किए, फोर से स्टार्ट किए, फोर से स्टार्ट किए, फिर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट प्लस टेम्पररी, तो टेम्पररी हमारे पास क्या है, हमारे पास -1 है, रिजल्टेंट जीरो भी रखो तो क्या लेस देन जीरो है, तो हम क्या इनएफिशिएंट है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जीरो या फिर जीरो से ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से कहीं हम सर्वर पाथ कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम क्या स्टार्टिंग इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, अमॉन्ग द वेरी इजी क्वेश्चन। सो देखते हैं सही है या नहीं है हमारा सॉल्यूशन। सो ऑफ कोर्स इट इज़ क्वाइट करेक्ट, बीट भी सही है। सो दिस इज द अप्रोच। तो हम गैस स्टेशन हो गया, कैंडी इज अ हार्ड क्वेश्चन, टैपिंग ऑफ रेन वाटर इज ऑल्सो अ हार्ड क्वेश्चन। So I do have solved 16 to 17 questions in a row. Now let's move to the next question, that is candy. That is a hard level of question. 20 question I do have solved in 2.5 hours, and I'm solving continuously from 2 hours. So let's move to the next question, that is understanding each child is assigned a rating value in the teacher rating and given candies to the children subject to the following requirement. Each children must have at least one candy. Children with a higher rating gets more candies than their neighbors. Return the minimum number of candies you need to have to distribute them to children. ठीक है यार। We have two pointers, we have sliding window, we have matrices, hash maps, intervals, stacks, linked list. Let's change the topic and try to solve this question. This is a very funny question. Very Here in this question, this is a question of linked list. Given a head of the linked list, determine if the linked list has a cycle in it or not. So cycle means what? If we have a linked list, suppose that we have a linked list of 3, 2, 0 and 4, and we have to detect a cycle. That means one index, if you will start from a certain index, then will return, you can return on that index if you are just moving linearly. Then we have a cycle. For example, if we are starting from index number 3, then moving to index number 2, then moving to index number 2, then moving to index number 4, then if there will be no cycle, then there will be null. But in this particular case, we will not strike null value. So that means there is cycle. So first approach is using hash map. So make one hash map, and we have to check whether any particular element that we have encountered earlier is again appearing or not. If it is again appearing, that means we have a cycle, because in a linked list every node is unique, and in no any node can appear more than once. If you are appearing more than once, that means there is a cycle, and we are supposed to detect the cycle. So in this particular way we can detect the cycle. So if MPP ऑफ नम्स ऑफ आई अगर हमें फिर से मिल रहा है, अगर हम गए 3 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, तो 2 हमारे पास इस मैप में स्टोर हो गया, लेकिन हम 4 से वापस लौट के जा रहे थे, फिर से हमें 2 मिल रहा है, तो दो नोड एक से कैसे मिल सकता है, लेकिन लीनियर हम जा रहे थे, तो दैट मीन्स यहाँ पे साइकिल है।
एक बोल बना दो आंसर, उसको पहले फॉल्स से इनिशियलाइज कर दो, जब साइकिल मिलता है उसको ट्रू कर दो, बाकी रिटर्न कर दो। क्या कर रहे हो भाई, मुझसे करके बैठो क्या, इसमें एन कहाँ से लगा, साइज कहाँ से फाइंड कर लिया तुम। हेलो। हेलो। हाँ कर रहे हैं कॉल, रुकिए अभी। हम्म। Here we have list node actually. Where is nums bro, क्या कर रहे हो। अब ये सॉल्व करते करते लगते हो थोड़े दिमाग घूम गया अब तुम्हारा। Oof. Going through it. It is quite easy program यार, quite easy। हाँ, सॉल्व करते करते आप थोड़े से आउट ऑफ फ्लो हो रहे हैं। Oh. I think it's giving some error, but I don't know why it is giving error. I think it's absolutely correct. It is absolutely correct, but still it is giving some error. Not know why. If we'll do in another terms, then it will be right at 10 today data and switch to trail temp of data.
there is difference uh, in the name of variable in various in different platforms. That creates a lot of problem here. It was actually correct भाई. सॉल्व करते करते काफ़ी टाइम हो गया. That means that's why I'm little bit tired actually, and this is the result of tiredness only. This is quite easy question. This is quite easy problem. Basically, here we are supposed to find the loop in the linked list, so we can find it in a very easy way, because if here we have initialized another map with node star and int and something, so you will store each and every node in the link in the map, and if that particular node encountered again, that means there is a loop, because it is not possible to encounter it again if you are moving it linearly. So this is the approach and this is the solution. I think I should take rest because I am solving it continuously uh, from about 2.5 hours, or you can say that 3 hours in a row. So it's becoming quite tactic for me to solve it now. After a break of 15 minutes, I will solve it. 15 to after a break of half an hour, so I will solve all the questions again. Then we'll solve the question can named candy. I do have solved 20 to 20 questions now in a row. So let's have a break. If it is feasible to travel through the subprofile, then it will be using solution. So we are required to find the reward of the what we are required to find. 20 kilometers starting destination will be will travel. Let's say the start and get in the next tree and fill up the gas so that we will explore. Okay, then we will travel to that. Minus one, we will go there to that. You can start from so solve some question. Stop the education. ये इसमें जीरो से उसमें स्लाइस कर दिया और टेम्प वेरिएबल बनाया चार दिन तो गैस थी और आगे जाकर भी एक दिन जाएगा और वो बचा कितना तो वो टेम्प कितना है टेम्प हमारे पास बचा 3 अगर टेम्पररी हमारे पास और अगर जीरो से कम हो जाता है जैसे यहाँ पे हम देखते
Let's try to solve some other questions also. I will try to solve hard level of questions after some time, because I will solve each and every hard level of questions also, but I will solve it in a later period of time. So basically, let's move to some other questions that we are supposed to solve. Roman to integer and integer to Roman is a very easy questions, and I will not waste my time on that particular thing. I will solve last word question. I do have solved 21 questions till now. So now let's move to the next question. Just check. Let me check. Is the live is working properly or not? One take है. And three step to the last sentence. So I will have solved 21 questions till now. So now let's move to the next question. Just check. Let me check. Is the live is working properly or not?
So let me. It's working fine. I should put my mobile phone on charge. So now the next question is less length of last word. So here the last word is word and with length of 5. So how would you find which is the last word? It is a question. It is one of the quite important questions. So here for that particular purpose, I think I can use stack. Yeah, for that particular purpose, I can use stack, but and the top of the stack would be the last word. But there can be some another feasible way also. So, so, and so. We are only concerned about finding the length of the last word, excluding the spaces. We are not supposed to find the length of the word is maximum substring consisting of a straight character only. Given a length of string is consisting of word and spaces, return the length of the last word in the string. ठीक है. Let's use stack. I would first of all I am trying to solve this particular question within the stack. Then after I will solve this particular question using other approaches also, because in order to solve this particular question there can be a lot of approaches. So as per the kind time complexity and space complexity, after proper analysis of time complexity and space complexity, we can solve this particular question more effectively and more optimizely, because optimization is very important as far as the DSA question is concerned. And in interview also this type of questions are asked, but how you answer that particular question is very important. So let's solve this particular question using a stack. So let's move on. So let's make one variable named temporary string actually.
If there is space, then if there is space, and if temp is not equal to null, then st dot push what temp, and make that temp otherwise we have this. There is a mistake, I think. Enjoy by taker. So how a length can be that? It is not possible. I think I have done some mistake, and I should not do any mistake. Okay. If s of I is this and temp is not equal to this, then st dot push temp t, and temp is equal to this. Otherwise, also temp is equal to this. That's correct. Else temp plus is equal to s of I. S of I. ठीक है. Answer is equal to st dot top dot length. Well, that's correct. So where I'm doing mistake, I think I'm not doing any mistake. Expected 6, why it is 6. However, the was patient and the length of the last one string, I will maximum string consisting of non-space character would take care. Everything which it is 6. Take care. Still, it's getting something, something, and something. Of course, of course, of course. Last one को हमें put करना होगा. Put करना होगा. लास्ट वाला तो अंदर जा ही नहीं रहा था. Accepted. Correct. सो बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, सारे जब क्या स्पेस आ रहा है ना, तो हमने उसके पहले वाले सारे कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग के फॉर्म में अंदर डाल दिया है स्टैक में. तो सबसे ऊपर वाला जो वर्ड होगा वही तो लास्ट वर्ड होगा स्टैक में, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसमें. फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, फिर फिफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट.
तो लास्ट वाला वर्ड जो होगा उसका लेंथ निकालना है, तो स्टैक का जो टॉप होगा उसका लेंथ निकाल देंगे स्टैक में डाल करके, बस हो गया। ये क्या, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। सो यू आर सपोज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है ठीक है ठीक है। सो सो एंड सो हम इसको सबसे पहले तो एक मैप के यूज से बना सकते हैं। किसी भी दो को उठाओ, मैप में डाल दो, ठीक है। मैप में नहीं डालोगे कोई बात नहीं, मैप में मत डालो। जो सबसे छोटा स्ट्रिंग है उसके रिस्पेक्ट में डील कर लो, नॉर्मल कर लो। So vector might provided as strings of something like that and all, ठीक है। I will solve all the questions in the next episode. In this particular episode, I have solved 22 to 23 questions, but I'm getting exhausted for an hour. But as far as this particular question is concerned, I can give you approach. Approach is basically if you are concerned to find the longest common prefix, then we can solve it using the hash map also, or we can solve it using the brute force approach that I will discuss in another live video. Just for now, I'm just going to put it off because I'm going to miss. I have to go to miss because there is a limitation of time as far as miss time is concerned. So I will solve each and every question of this particular sheet. If I will try to solve each and every question of this particular sheet in one day itself, I do have solved 25 questions, and I will solve more than 75 questions now also. So in one day I will solve 100 questions of top interview questions of lead code. I would solve
100 questions out of 150 questions of top interview seat of lead code. It is quite good seat, uh, as far as my opinion is concerned. It is quite good seat, and I will solve each and every question of that particular seat. Thank you very much for watching if you have watched, because I have not uploaded this video for that particular purpose. I have uploaded this video because I was getting bored, and I just want to explore something new. That's why I tried to solve this particular sheet on a YouTube live. So if it was helpful for you, then thank you very much for paying attention. If you have paid